Hello everyone, welcome to my YouTube channel. As you all know, we are discussing basics that is required for you to understand the concepts of physics. As we already discussed some basics called trigonometry, differentiation, integration. In this series today we are going to study graphs. Yes, you heard correct that we are going to study is graphs. Basically in science, after 11th or 12th, or you can say in 11th, 12th, graph plays important role. To understand some laws or to understand some equation, graph plays very important role. So before we start some chapters, we should understand how they are connected and how they necessary to understand the concepts of physics. In this series today we are going to start with straight line. Yes, straight line. When will this straight line will form? है ना? So first of all, I will tell you when two physical quantities are directly proportional to each other, then their graph will be straight line. If you doing some experiment or if you are reading some law in which two physical quantities are directly proportional to each other, then their graph will be a straight line. As you can see here, A is directly proportional to B. So if we solve this, we'll get A equals to KB. So the graph between A and B will be a straight line, as you can see. To understand this topic, I'll give you one example, Ohm's law. As you already study Ohm's law in your 10th syllabus, Ohm's law says that V is directly proportional to I. Yes, potential difference of the wire is directly proportional to the current. So the graph between them will be a straight line. है ना? One more law you can understand very well with this. F is directly proportional to the displacement. This law is called Hooke's law. In some boards like RBSC, you have already studied this law, but in CBSC you will going to study this law in 11th class. But I'll tell you that according to this law, force is directly proportional to the displacement. Here the minus sign signifies that the direction of force and displacements are opposite to each other. So as both of them are directly proportional, so their graph will be a straight line. But in this graph, the straight line has a decreasing slope. The slope is decreasing because of this negative sign. Now, if we have to express the straight line in mathematical equation, then we'll use this equation y equals to mx plus c. Here m is the slope of the straight line and c is the intercept. Now we'll discuss about slope and intercept. Here you can see this straight line is not started from the origin. It started from the y-axis. So this perpendicular distance on x-axis, or you can say this distance on y-axis, is called intercept, which is represented by c. And this straight line is inclined towards the x-axis. है ना? This straight line is making theta angle with the x-axis. So this inclination of the straight line is here known as the slope of the straight line. So both these quantities are very important in the studies of straight line. Now let us take one example. Y equals to root 3x plus 2. This equation is in the form of the general equation. Here intercept, by comparing these two, intercept is 2. So this straight line will start from 2 on the y-axis. Now at this place of slope, here is root 3. So m is root 3. For now you'll take this formula of m is tan theta. I'll explain you further. By comparing these two, we'll get theta equals to 60 degree. इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y इक्वल्स टू x एक्सिस पर 2 से स्टार्ट होगी और जो इंक्लिनेशन होगा x एक्सिस के साथ वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है आपका 60 डिग्री बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं अभी इनिशियल लेवल पे स्ट्रेट लाइन के रिगार्डिंग. अब हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस स्लोप. तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए देयर इज अ ग्राफ बिटवीन x एंड y. आपको डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे.
The formula of slope is delta y upon delta x. तो by open this you can write is y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए y एक्सिस पर, उनका डिफरेंस और उनके कॉरस्पॉन्डिंग x पॉइंट का डिफरेंस का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड स्लोप. इसको मैथ्स में dy by dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं. मैथ्स वाले बच्चे they will study straight line in their 11th maths, but for bio student they have to understand the concept of slope here in this class only. Or one more formula of slope is tan theta. You have to read it or you have to remember it because they are using directly. कोई concept पीछे में जाने की जरूरत नहीं, कहाँ से आया क्यों आया, इतना डिटेलिंग बायो के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट हाँ मैथ्स वालों को रिक्वायर्ड है. So they will study in their syllabus of maths. For physics they'll only have to revise this they only have to memorize these formulas. So suppose slope का कोई क्वेश्चन आ गया, आपको एक स्ट्रेट लाइन बना के दिया, एंगल दिया 45, आपको कुछ भी दे सकता है, then simply use this formula and you can find the slope. Or in next example we have given the coordinates. So if coordinates are provided then you have to use this formula and you can calculate the slope of the straight line. Now there are some graph related to this equation. Here first one is mx plus c, both are positive, so this graph will be this. Plus c मतलब this distance will be plus c and plus slope होने का मतलब है the straight line will is increasing. ठीक है. Now next equation is y equals to mx minus c. Now the intercept is negative. It means the perpendicular distance on x-axis will be in the negative half. तो negative half lower होता है, तो straight line will start from the lower half. Because slope is positive, that's why straight line has increasing slope. Now let us consider a more example. Next equation is y equals to minus mx plus c. Here slope is negative but intercept is positive. तो intercept positive upper half में होता है. नेगेटिव स्लोप का मीनिंग है द स्ट्रेट लाइन हैज डिक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीज हो रहा है एक्स के साथ में, तो डिक्रीजिंग स्लोप्स बना दिया. y equals to minus mx minus c, both are negative, तो both are negative will be in the this quad, this will be the minus c and slope will be negative. और सिमिलरली x के रिगार्डिंग भी हो सकता है, जैसे x equals to प्लस का my प्लस c. सो y का जब हम कंसिडर करते हैं तो इंटरसेप्ट y पे कंसिडर करते हैं, जब x के रिगार्डिंग इक्वेशन आता है तो इंटरसेप्ट x पे इमेजिन करते हैं, यानी x पे ड्रॉ करते हैं. प्लस का c इट मींस इस वाले हाफ में लाई करेगा, प्लस का स्लोप है तो इधर जाएगा ये. ठीक है. सेम माइनस का c तो इधर से स्टार्ट होगा और इंक्रीजिंग है दैट्स वाई ऊपर जा रहा है. माइनस का my प्लस c तो इधर होगा, माइनस my मतलब डिक्रीजिंग स्लोप. सेम एक और इक्वेशन. सो कोई भी इक्वेशन आपको प्रोवाइडेड हो सकता है, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ये देके ये पूछ सकता है, ग्राफ देके इक्वेशन पूछ सकते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना ही चाहिए. नाउ आई हैव टेकन 2 एग्जांपल्स सो यू कैन रिलेट विद द स्ट्रेट लाइन. वन इज इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन, एज यू ऑल नो v इक्वल्स टू u प्लस at. दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन. अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो आपको समझ में आ जाएगा. y एक्सिस पर वेलोसिटी को प्लॉट करो, x एक्सिस पर टाइम को प्लॉट करो, देन यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन. बिकॉज देयर आर 2 टर्म्स, सो जो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है दैट विल एक्ट एज अ इंटरसेप्ट. यस, और एक्सेलरेशन हियर एक्ट एज अ स्लोप. सेम एक और इक्वेशन होता है रिगार्डिंग रेजिस्टेंस दैट यू विल स्टडी इन योर 11th क्लास, बट वी हैव टेकन द एग्जांपल सो यू कैन रिलेट. r इक्वल्स टू r0 प्लस r0 अल्फा t. अगर वापस इसको रीअरेंज करके ड्रॉ करते हैं तो देयर ग्राफ विल बी दिस. नाउ वन मोर थिंग, एज यू ऑल नो ओम्स लॉ इज v इक्वल्स टू IR and their graph also is a straight line, but the difference is in this graph the straight line will start from the origin. Why? So let me tell you why. Basically in straight line there are 2 terms, one is for regarding slope and one is intercept. If we compare this equation with this, there is only one term. It means here intercept is 0. अगर intercept 0 होगा, this means a perpendicular distance will be 0. So this line will be start from the origin. So if you are studying any law or you are doing any experiment in which you are getting only one term, then you have to understand that the straight line will pass through the origin, because in this case intercept is 0. So this is all about straight line. Now we'll discuss about parabola. Yes, parabola, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं परवलय.
when one physical quantity is directly proportional to the square of the other physical quantity, then their graphical relationship will be parabola. Now what is the shape of the parabola? Basically हम discuss करेंगे, पर देख लीजिए इधर पहले a directly proportional to b square, इसको solve करते हैं. तो कभी भी ऐसा कोई relation you will notice then the graph will be parabola. I'll give you some example like kinetic energy. Formula of kinetic energy is half mv square. Here kinetic energy is directly proportional to v square. One physical quantity is directly proportional to the square of the other physical quantity. So their graph will be a parabola. U-shaped graph आता है. Same potential energy of spring. Here U is directly proportional to x square. So graph कुछ ऐसा बनेगा इसका. Mathematical equation of parabola is y equals to 4ax square. Here 4a is the constant and x square is belong to x-axis. So इस equation के regarding parabola का graph ये आएगा. Now if we are using this equation y equals to minus का 4ax square, because minus आ रहा है तो lower half में parabola बनेगा. X equals to 4ay square, then parabola will shift in this half. If equation is x equals to minus का 4ay square, then it will form in this half. There are two examples as I already told you. Potential energy of spring इसका इस half में बनेगा. And one more example, momentum square is equals to 2mk. Here m is mass and k is kinetic energy. So their graph will be parabola, but because यहाँ पे आ गया तो ये यहाँ form होगा. ये वाला केस हो गया आपका. नहीं सॉरी, ये वाला केस हो गया, तो इसलिए इस तरह बनेगा. नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर शेप दैट इज हाइपरबोला. हिंदी में से बोलते हैं अति परवलय. व्हेन दिस ग्राफ विल फॉर्म, व्हेन वन फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अदर फिजिकल क्वांटिटी, देन देयर ग्राफ विल बी अ हाइपरबोला. सो अगर ए बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो देयर ग्राफ विल बी हाइपरबोला. हाइपरबोला बेसिकली बॉयल्स लॉ का ग्राफ अगर आपने स्टडी किया हो, बेसिकली यू स्टडी दिस लॉ इन 11th क्लास, बट आई टोल्ड यू व्हाट इट इज. द प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस. सो अगर पी और वी में ग्राफ फॉर्म करते हैं तो ऐसा हाइपरबोला अचीव होगा हमें. तो दीज आर द थ्री बेसिक क्या कह सकते हैं शेप्स दैट यूज इन फिजिक्स. देयर आर मेनी मोर, इलिप्स, सर्कल, है ना. तो वील डिस्कस ऑल दीज शेप्स इन नेक्स्ट वीडियो. Till now you have to study this and understand when will straight line form, when will parabola form and when will hyperbola form. I hope आपको clear हो गया होगा. तब तक के लिए do subscribe, comment, share my YouTube channel. I am your teacher or you can say your friend Deepika Saini signing off. So मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye bye.